And now we're going to move on to module 5, which is going to look at data and interpretation. First, we'll start off with evaluation methods. There's going to be a lot of discussion on that. We've just adjusted the agenda a little bit to make sure that it flows better. I would like to invite Dr. Inayat, who is who's an assistant professor at the Government and Public Policy Department at NUST, to deliver the first one, which is a session on evaluation methods. We will finish this session around 1:30 p.m., inshallah, and then we'll break for lunch for an hour, and then we'll continue with the next one. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Maheen. Thank you, the Oxford Policy Management, GIZ, and thank you, Professor Esther, for being here. We have been learning from you a lot. And thank you to all of you bringing so much experiences from your fields to this incredible event. I'm really sorry that I'm suffering from Zukam and for the last few days, and my voice, may not be really attractive to you, but I have to try my best, to engage you into some discussion that's going to be more technical. My name is Inayatullah. You can call me Inayat simply. Before I begin with the methods for evaluation, I would like to know about sort of the background, if you are having, some of you might be having relevant to the impact evaluation method. So how many of you are having a PhD or maybe master or graduation in economics or statistics? Could you please raise your hand? Okay. And then, sounds like a few of you are having little bit familiarity. All right. I know that's what I'm looking for. That's wonderful. Yeah. And we need to capitalize on your expertise in that. So basically, I have put a sort of a very, very simple question for you. Think about this, because we have been talking about the impact of the program, assessment of the program, effectiveness of the program. A lot of programs have been being implemented, maybe in your departments in programs. And most of the times you might be interested in, when we refer to the effect of the program or the impact of the program, what do you actually mean by that? Is that simply producing some output of that program, that number of beneficiaries received the stipends, number of families getting some cash transfers, or that's something beyond that? And generally speaking, so here, let's say Mr. Unfortunate takes a pill and then 5 days later dies. Then do we simply say that he or she died because of the pill? If we are able to conclude this statement through a scientific process, maybe, then that could be a sort of believable stuff. But if we simply attribute his death to the pill, just because he took the pill, he died, I think we might be suffering from type 3 error. And that's what we normally refer to, that we attribute an effect to a program or a project that potentially might not be attributable to that. That might be because of some other reasons, but we might be wrongly attributing that to the problem. And even that's even a bigger challenge for us, because it's going to cost us to scale up the program. And it's also, we generalize the effect. So maybe others are learning from us, other countries and other governments. And if our conclusion is drawn on a not a right approach, so we might be contributing to something really bad in the society. So that's the idea behind rigorous impact evaluation in social protection programs. Of course, this is also done in other developmental projects. So we simply cannot conclude that just we see there is a program or project going on, and we, on the other hand, we observe some effects, and we simply attribute that to that program.
we need to go through a rigorous scientific process. I'm sorry, you have to bother me because this is technical details, but I will do my best to take your interest into this as well. This is going to be interesting as well. So I'll talk about quickly public policies and impact evaluation. Most of you are familiar with that, but I'll emphasize on how is it important to capitalize on evidence-based policy making, and just a little bit familiarity with what do we mean by evidence, actually, the rigorous evidence. And then randomized control trials. Most of us are talking about RCTs everywhere, right? So what is the design of RCT? What could be an ideal RCT for an impact evaluation? Then differencing and differences designs, that's even a natural experiment sort of causal inference design. So we can also use that. And commonly regression discontinuity designs. You must be a little bit familiar about the criteria of enrolling of a household into the cash transfer program, or what you roughly we mean that any score that we can assign, using that score we can assign a household into whether that household is eligible for the stipend or not eligible for the stipend. So I mean, that's something really good, and there is some really interesting econometric designs that can be used to utilize that threshold, and then later on draw a causal inference about that the program was really effective. And people will start believing in that because that's a scientific process, unbiased process. There is no sort of personal prejudices and personal opinions. Okay. So the general idea is that we cannot make sense of the effect of a program unless we come up with causal evidence, the evidence that's generated following a rigorous scientific process. If not, then we might be simply arguing with each other that, okay, the program we implemented was that much effective and others implemented was not effective, but who will actually decide at the end of the day? So there are like social scientists, they're working in this area, and there are some ways that enable us to generate evidence that are irrefutable to some extent. And if those evidence are irrefutable, then we can simply say, okay, we can easily convince the stakeholders, including the legislators, the government, the ministries, and the international organizations that yes, there are evidence that the program was effective, and those evidence are such that there is no sort of a bias or potential limitations to that. So we're trying to minimize those limitations. So normally all these programs are designed to change some outcomes of interest, such as the household consumption, health expenditures, education, and so many other outcomes of interest that we might be interested in. And the idea behind introducing a large-scale program is that we are trying to change that outcome of interest, and we introduce a large-scale program toward that. But do we really attribute those changes to the program? That's actually the question that we need to answer. So I just discussed this, whether the program is effective or not. So if we differentiate evidence-based policymaking from just a policymaking process, so the difference is that the policymaking that's based on the rigorous evidence generated through data collection and some analysis that produce causal inference of the effect of the program, and then couple that with some qualitative evidence as well. So that makes a better sense of drawing a generalized conclusion about the program was effective or not. So and these results that we generate through the scientific process of large-scale programs, they allow development organizations to set and track national and international targets. Yes, we can track the progress of how effective programs are being implemented. To what extent are we going to achieve those desired targets? And then those evidence constitute a strong foundation for transparency and accountability as well. So the process is such that that has minimal bias, minimal local biases. So yes, you can claim that yes, the program was implemented
in a transparent way. The data was generated, and here is the data that tells the story. It's not that we are actually arguing about the effect of the program. And most of you are dealing with data, and that's actually important for us in future also. If the program is effective, the data will actually tell the story. So what do we do in impact evaluation process is that we are particularly interested into whether the effect was causally attributed to the program or not. So that there are a lot of confounding factors that might be manipulating the results, or maybe disturbing what we actually are interested in. But at the end of the day, when we draw a conclusion, we should be clear about that the conclusion we have drawn is such that we rightly attribute that to the program. And you must be wondering, what the hell is that? Every time we talk that attributable to the program, causal effect of the program, what do we mean by that causality? So I'm going to focus on that causal inference of the program. And just to take your interest into that, I'm sure you may not be technically doing this, but at some point in time, you might be commissioning an evaluation project that will be evaluating the program that you are implementing. So, and at that time, these insights would be really helpful for you to assess whether that evaluation project is good enough to produce findings and report your recommendations. And so that will increase your confidence in the effect of the program. So what we normally do in impact evaluation is that we estimate the average effect of the program. I know that most of you are familiar with averages, but that's not the simple average, the one that we just simply get the average effect of the program. There is a procedure that has to be followed. For example, when we are trying to answer the question that did BISP increase the household consumption among the beneficiary household, yes or no? And if yes, to what extent has that happened? And then a lot of other examples of such questions could be there. So in these questions, basically, when we say whether it was BISP that changed the household consumption, or whether it was by some natural trend, maybe there is some, let's say, inflation, or there is some other confounding factor that might be affecting the household expenditures, and maybe we might be wrongly attributing that to BISP. But even if we do that, we should be able to support that with evidence. So most of you must have heard about the Progressa, the first cash transfer program that was experienced in Mexico. And the idea behind was that households will be receiving cash transfers that will be conditional on sending their children to school. So we can do two things. We can support them in their household expenditures, but at the same time, we can also increase the enrollment. And this enrollment is a particularly prevalent problem in developing countries. So normally the conditional cash transfer idea is that so we can support the household by incentivizing them and also motivating them to get some other things that we are interested in. That's also the idea behind that. And then later on, there were really good studies that reported that, yes, Progressa was really effective. So when we say Progressa was an effective program in terms of increasing enrollment, we actually mean that there were some really rigorous studies, causal studies that were scientifically conducted by experts in the following years. And they came up with this conclusion, and they agreed that the program was really effective. And today, in Pakistan and other countries, when you are actually talking about the conditional cash transfer, the non-conditional cash transfer, this idea was basically introduced at that time, but it was followed by rigorous evidence that actually convinced the developing countries to start these programs, because there was evidence that these type of programs are effective. I know that we should contextualize these programs to the local, characteristics, but still, the evidence suggests that in developing countries, conditional cash transfers could be very effective tool for increasing enrollment, household expenditures, and so many other things. So, so what I'm here today is that to differentiate between the program, what normally you are implementing it, and the impact of the program, right? The outcome of the program. So my focus would be more on that. How can we get that impact? Could be medium or could be long-term impact of the program, but the procedure or the methodology that we can follow, and that can enable us to draw a conclusion about it.
Okay, this was the response to Progressa impact evaluation. If you are interested in what was the response, so there are a lot of materials you can search about them, and really interesting studies have still being conducted. Those are like 10 to 15 years long-term studies, and people are still attributing those effects to those programs that were implemented 15 years ago, maybe, or 10 years before. So okay, so I hope you understood a little bit that when we refer to cause and effect, we refer to cause the program, effect is the outcome of interest that we are. For example, in social protection context, there is a cash transfer to households, and our desired outcome is that in the long run, let's say, that the amount that the head of the household might be spending on health expenditures, that could be redistributed to the education of the children in the long run. But since currently they don't have money, so we can support them with a cash transfer programs, or maybe we can support them with a condition with a health insurance program. So that's the idea of that cause and effect of the program. When it comes to data, there are two approaches to the impact evaluation. One is that we can embed the evaluation of the program when we implement the program right away, and that's a better approach. That means that we are having we collect the baseline data before the program is actually implemented, and we collect data about those socioeconomic characteristics that we might be interested later on to gauge what happened to those characteristics after the program implementation. And normally in developing countries, I mean, I know this is really expensive to conduct an RCT, but RCTs are, if the countries can afford, could be the best way to scale up the program. But before that, a pilot program could be an ideal scenario for that. But retrospective is yet another solution to generating the the impact of the program. And that is, let's say you could not embed that evaluation process while you were implementing the program, but you have data later on the program was implemented, and you use that data retrospectively, and you can conduct a natural experiments, you can find a good comparison group for that, and then you can implement those econometric tools, and then that can also allow you to draw a causal inference about the effect of the program. I think somebody talked about the graduation approach today, yeah, this morning in Pakistan. But how many people were graduated? That could be sort of, maybe that could be an output of the program. But the long run effect of the program sometimes is that we go beyond that. Those effects that we might not be perceiving it in the start of the program, maybe there could be some other effects as well. We can also look into those effects. BRAC is very popular, social protection interventions, including other things as well. A lot of studies have been conducted on that. Okay, what type of data do we need? I talked about it a little bit earlier as well. Mostly the quantitative data, the quants, that's more important, and that's what you're dealing with, because large scale data sets actually allow us to apply those statistical tools, and those statistical tools are such that can allow us to draw a meaningful conclusion. And qualitative evidence are good. They are sometimes coupled with quantitative evidence, but in social protection, and when we refer to impact evaluation, mostly the quantitative evidence are coupled with the qualitative evidence from the field, and those two can support each other, and that could be the best methodology for impact evaluation, what you can refer to a mixed methodology, right? Both of them. So when we begin with impact evaluation, we begin with constructing the theory of change. What is the theory of change? That is, we hypothesize that, okay, that is the program we implement. So there are some inputs going into the process, activities are done there, and there is some output generated as a result of the program. And then later on, what do we expect on the outcome of interest? But we have to decide in the beginning that what is the outcome of interest that the program is actually targeting. So, and this requires us to develop a very clear results chain. And you must be familiar with that, okay, what are the inputs? What are the indicators of inputs? How do we measure that? What are the activities done there? And what are the output there? What are the indicators of output?
and then what are the short run outcomes, what are the long run outcomes. So we can decide that well in advance before, I mean, starting the evaluation process, and then we can look for data related to those individual indicators that we identify. And then importantly, a very simple statement, evaluation question. So evaluation question should allow you to frame this question in a way that you can put that question into a testable hypothesis, okay? And that question actually tells you that what is the cause and what is the effect. There could be a number of effects to one program. So you can also, develop a theory of change that leads to different outcomes of interest. That could be another interesting area of the impact evaluation. So a theory of change is a description of how an intervention is supposed to deliver the desired results. So that's the logic actually. And you actually theoretically understand that these type of activities are likely to affect this particular characteristic of the household, and that's why we expect that, okay, that might happen to the outcome. For example, health of the head of the house, health of the children. So we can think about this logic that, okay, if the money goes to the household, so in the absence of the program, the household might be spending that money on the health of the children. If the insurance program is given to them, that money can be redistributed. They can send their children to school. And that's a simple logic we can make. So that's actually the theory of change. But we can frame that in a way that allows us to test that. Going back to the results change, here is the results change. You can see that, and I'll share that tomorrow as well with you later on. But there are inputs, activities, outputs, outcomes, and final outcome. What are we interested? You can look into the bottom there, the results. That's the demand and supply side. So we are more interested in the final outcomes of when it comes to the impact evaluation. How do we decide that the outcome is the final one? Yes, because the programs normally run, and when do we stop? We never stop. So that long run actually depends on your worldview up. How long do you see that program goes on? So, but anyways, there could be a medium term outcome, there could be long run outcomes. Okay, again, that's the key impact evaluation question, right? What is the impact or causal effect of a program on an outcome of interest? The evaluation question needs to be framed as a well-defined testable hypothesis. Why testable hypothesis? Because we need to have an indicator that's measurable. For example, if I'm talking about the health of the children, I should be able to measure that, whether I'm talking about height for age or weight for age and whatsoever. So there could be a number of indicators that can be measured, right? And when we are unable to measure an indicator, that could be a very good research question, but you might not be able to statistically test that because you might not be able to collect data on that. What so okay, this is a little bit more econometric stuff, but just bother with me. That's very simple model, but here is a potential problem that you should identify. If we talk about the impact, so that difference, the delta that you see, is that when the program exists and when the program does not exist, the difference between these two states could be the impact. That's very simple, right? What potential problem do you see? I'll just give you, 30 seconds to think about it, and just to let me know that what is the potential problem in this particular scenario. I mean, the Y means their outcome, and P means the program, let's say, in the presence of the program and in the absence of program. You deduct that from each other and you get the impact. But what is the problem that we are facing in real life if we cannot do this? Those who have done economics must be knowing about this. Please. That is one of the reasons, but not the main reason. I mean, not the main reason that we are unable to do this process. Just think about it. Because if the household gets the program, if the household is enrolled in the program, at the same time, that household can never be such that does not have the program. So a household can either have the program or have not the program. And we have to compare apple with apple, not apple with orange, right? So normally that's a big challenge for the impact evaluators, that
we do not have a good counterfactual, a good comparisons. The best would be if there is a perfect clone of the household, right? Clone mean the same household. अगर जिस हाउसहोल्ड को पैसा मिला है एग्जैक्टली उस टाइम पे हमारे पास वो हाउसहोल्ड हो जिसको पैसा ना मिला हो, ये हो ही नहीं सकता. एक ही हो सकता है ना. यू आइदर बिकम अ ट्रीटमेंट, यू आइदर बिकम अ कंट्रोल, यू कैन नॉट बी बोथ. So that's actually the problem of counterfactual. We call that a counterfactual, but you can call that the problem of having a good comparison group. So what's the solution? The solution is that on the other side of the dotted line, you can see that is something we never have, and that is never possible, right? In reality, in real life, that's never possible. A household can be either in the treatment group at the same time or in the control group, not in both. So if we do not have that, so the other solution is that we estimate that. And statistical process, econometric process, they actually allow us to estimate why given the program was not there. We can say that that household would have, what would have happened to that household had the household not received the stipend or the cash transfer. So that's what we call, you can see, look there, impact is equal to the outcome with the treatment minus the counterfactual. And the counterfactual, we actually mean that we estimate what would have happened to that particular household if that household was not under the program. तो थिंक अबाउट दिस. ये तो बड़ा बड़ा मसला हमने हल कर दिया कि हम एक ऐसा हाउसहोल्ड भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिसको अभी तो प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अगर प्रोग्राम ना चलता तो हाउसहोल्ड को क्या होता. ये सवाल हम इसका जवाब स्टैटिस्टिकली दे सकते हैं. And how do we do that? We use statistics for this purpose. But look at this simple illustration that, okay, there is a money going to Mr. Florentino, and and we are trying to look into the effect of that money on how many candies that person is using there. So simply impact would have been 6 minus 4, 2 candies, right? Because before and after, and simply comparison. But the problem is that we never have that perfect clone of this person. We use statistics. And statistics actually allow us to use the average, and we can use 2 samples, and we can differentiate those 2 samples, and we can come up with the difference there. But the challenge is that the sample without the program is a comparable one with the one with the program is a challenge. So okay, so the answer is the evaluation methods. And evaluation methods actually allow us to do that process. So first we begin with the randomized control trials, RCTs. And then there are others as well. So randomized control trials in simple word is this. So there is a society where the program is being implemented. Okay, but before the program is implemented, we want to pilot that program on a subsample of that population to see whether the effect really exists or not. And of course, it takes time. So we identify a population. And in that population, we assume that there are people that are eligible to a program, and then there are people that might not be eligible to that program. Our idea is that those who are eligible to the program will enroll into the program, and later on, we will see what happens to them. And that sample, actually, we divide that sample into 2 groups, 2 subsets. And one is we call that treatment. That means that will be observed under the program. And the other, that will be the control group. Control group basically means that the group that will not be receiving the program, but we assume that that will be a comparable set of individuals, households, or whatsoever unit of analysis you are having. So you can see there is a comparison group and there is a control group. The one with money, like consider that as set of the household that have received the cash transfer, and the other, the set of the household that does not receive the cash transfer. And the first part of this, drawing a sample that is representative to the population is called external validity. Why? It is important to be done in 2 stages, because deciding on the sample is very important in RCTs, because we need to make sure that that should be sufficiently representative to the population. And that's why we call that external validity. And that means that the extent to which that some subsample is representative of the larger population, so that later on, when we evaluate the effect, we can be able to generalize that effect towards the larger population.
And then there is internal validity. That means, okay, the mechanism is randomly selection, right? Because if we have a selection bias, then there could be a problem in the impact. आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई आपने जिस हाउस होल्ड को सिलेक्ट किया है वो बाय डिफॉल्ट ही पुअर थे, और जो कंपैरिजन ग्रुप में हाउस होल्ड है उसमें मालदार भी हैं और पुअर भी हैं, तो देयर इज अ डाउनवर्ड बायस। हाँ, ये तो बड़ा आर्गुमेंट है, आप देख सकते हैं इसको, दैट्स अ क्वेश्चन। लेकिन अगर आप रैंडमली सिलेक्ट कर लें सैंपल को, एंड देयर आर प्रोसीजर्स दैट यू कैन सिलेक्ट रैंडमली, आप उनके नाम लिख दें और बहुत बड़े चादर में डाल दें और शफल करके उसे पिक कर लें। Those individuals into the sample randomly, then on average we can expect in expectations that those two samples are similar to each other. They're just like perfect, not clones, but near to perfect clones to each other, given that you have a sufficiently larger number of observations. ये next नहीं हो रहा, आप देख लो। What is next? So this is yet another stage. Okay, you decided on a sample. So the next stage is you enroll those who are in the treatment, and those who are in the control are not enrolled. But these RCTs are normally implemented in different modalities. Sometimes RCTs are enrolling, partially enrolling. Sometimes it depends on the design of the evaluators. But the simple idea is that simply those who are enrolling into the program, the idea is that they become the treatment group, and those who are not enrolled, we need to make sure that उनके पास से पहुंची है कि एनरोल करें। अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ उन एनरोलमेंट वालों के पास पहुंची है और दूसरों के पास नहीं पहुंची है, तो दैट्स एक्चुअली नॉट अ गुड कंपैरिजन ग्रुप टू ईच अदर। वी नीड टू मेक श्योर दैट उनको परफेक्टली इंफॉर्मेशन एक्सेस है सबको। उसके बावजूद जब जो एनरोल करेंगे दैट विल बिकम द ट्रीटमेंट ग्रुप, जो एनरोल नहीं करेंगे विल बी द कंट्रोल ग्रुप। बट स्टिल देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, आई विल लेट दैट प्रॉब्लम टू यू टू डेलिब्रेट ऑन लेटर ऑन। अगर आप इफ यू आर वॉन्डरिंग कि हम रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं, तो दोस्त जो फेमिलियर है कंप्यूटर्स के साथ, दे कैन डू इट मच इजीली, बट कंप्यूटर्स एक्चुअली अलाउ यू टू रैंडमाइज एज वेल। You can randomize districts, you can randomize households, individuals, and whatsoever. That's not a big problem. And the more the number of units in the samples, the maybe the more precise are the results expected there. Okay, so we've got like two samples. One is the treatment, the other is the control, and we are expecting the impact to be the difference between the treatment and control. Very simple, right? You can see there, those people we having similar socioeconomic characteristics on average. When I say on average, that means we have a large number, sufficiently large number of samples. Why RCTs are reliable and more like people have more confidence, and you must have heard about the RCTs, because that's the gold standard of evaluation. The best methodology in evaluation is RCT. But of course, there are some pros and cons. RCTs are very expensive to conduct. You have to have you have to spend money, and you have to control the control group as well, that there is no spillover, and you need to have a good team to implement that. But besides this expensive, RCTs are also difficult in terms of time. अगर पाकिस्तान चाहे कि लार्ज स्केल प्रोग्राम लॉन्च करे पॉवर्टी एलिविएशन का, अब हम इंतजार करें 2-3 साल तक कि आरसीटी का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम लार्ज स्केल प्रोग्राम स्केल अप करें, एंड गिवन द पॉलिटिकल इकोनॉमी, so that politicians don't wait for those type of evidence, then the problem with RCTs is that you should have enough time to conduct the RCT and coming up with evidence. So RCTs takes time, and they take time, and that's why that could be a drawback, because you have to wait for the results before scaling up the program across the country. The other problem you should be thinking about that program. Let's say हमने household को enroll किया है program में, और एक district है जिसको हमने select किया हुआ है कि okay, there will be cash transfer into district Chakwal, and there is another district Attak that there will be no cash transfer into the household. RCTs type of experiments raise some ethical questions as well. अटक वाले कहेंगे कि भाई हमें आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे कि हम नहीं दे रहे, हम साइंटिफिक तजुर्बा कर रहे हैं। वो कहेंगे कि भाई तजुर्बा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कर रहे हैं, उनको कंट्रोल रखें, हमें ट्रीटमेंट करें, हमें बेनिफिट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं ये। सो दिस इज द क्वेश्चन, kind of it can raise some ethical concerns as well.
एंड द सेम माइट हैपन अगर आप किसी दूसरे स्कॉलरशिप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो you can see that, okay, those who are not getting the scholarship programs might be complaining about. So how to make sure कि उसमें ethical concerns भी ना हो, that is a challenge with RCT, but there are solutions to this as well. You can roll out the program with different phases and you can look into the impact differently. So उसके details में हम नहीं जा रहे बहरहाल. So once the RCT type of this type of process is done, think about the difference, and that difference is very simple. The difference before, I mean the magnitude of the outcome of interest before and after uska difference nikale, and the magnitude of the outcome of interest in the treatment and control का difference निकाले, and उसको differencing and differences एक tool है econometric tool, उसको apply करके आप impact calculate कर सकते हैं, बड़ा simple कर सकते हैं. So differencing is actually designed in this way. You can do it in RCT as well, but in RCT, a simple difference of the treatment and control group can actually tell you, but you have to make sure that हमने उसको randomly select किया हुआ है, ठीक है ना, और उनकी रैंडम सिलेक्शन के बाद ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप में कोई स्पिल ओवर भी नहीं हुआ हुआ है, सब कुछ नहीं हुआ हुआ, तो ठीक है. दूसरा जो अप्रोच है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के मेथोडोलॉजी वाइज, दैट इज द डिफरेंसिंग एंड डिफरेंसेस डिजाइन. दैट्स अ वेरी सिंपल डिजाइन, वेरी टिपिकल सिंपल, एंड दैट इज if we are having a good comparison group, if we are lucky enough to have a good comparison group for some reasons, let's say गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट में, रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से या फॉर सम अदर रीजंस, बट द प्रोग्राम हैज नाउ बीन इम्प्लीमेंटेड. अब आपने तो बाय डिजाइन कंट्रोल ग्रुप नहीं रखा है, लेकिन वो बाय डिजाइन जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां प्रोग्राम नहीं है वो कंट्रोल ग्रुप बन गया आपके पास. आपको सिर्फ ये चीज इंश्योर करनी है कि आपको देखना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम चल रहा है, सोशियो इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वो सिमिलर हैं कि नहीं. So you need to do one thing to identify the districts that are having similar socioeconomic characteristics with the one where the program is being implemented. And the next thing is that you should be able to have a data that also has those information before the program was launched. So, you know, in government, we are having panel data sets. There are a lot of data sets. They are having like the pre-program data and the post-program data, जैसे mix है, multi-indicator poverty survey है, इसके डिफरेंट राउंड्स चल रहे हैं. तो आपके पास अगर बिफोर द प्रोग्राम एक डेटा सेट है जो इंफॉर्मेशन है, दरमियान में प्रोग्राम लॉन्च हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है दूसरे में नहीं हुआ, या एक प्रोविंस में हुआ दूसरे में नहीं हुआ हुआ है, और आपके पास दूसरा मिक्स का राउंड आया है जो कि प्रोग्राम के बाद हुआ हुआ, आपने वो डेटा भी कलेक्ट कर लिया. अब आगे क्या करना है, ये सिंपल प्रोसीजर अप्लाई करना है, एंड दैट इज लेट्स से इनरोलमेंट वर्सेस नॉन एनरोलमेंट. तो इनरोल और नॉन एनरोल को कंसीडर कर लें कि जिस फैमिली को कैश ट्रांसफर मिल रहा है और जिस हाउस होल्ड को कैश ट्रांसफर नहीं मिल रहा, और बिफोर एंड आफ्टर, what was the situation of that household before the program was there, and what is the situation of that household after the program was there. And the data actually are there. Panel data actually allow you to do that if you are having data about those households, and having panel data is really a great opportunity to apply good differencing and differences design. And if you're able to do so, then the differencing and differences coefficient is actually the differences within differences, right? So the difference between after and before, and the difference between the treatment and control, the net difference will be the impact, the real impact. If I can, yeah, if I can go there. Okay, so I'm sorry, but so the idea of panel data is there, and that's why panel data are normally preferred, and we need to prefer that as well for the sake of evaluation. So let's say the program was implemented at this point in time. That's the time, right? Let's say 2018. And before 2018, there was no program. And we are having information about two districts. This is the districts where the program will be implemented in 2018. This is the district where the program will not be implemented in 2018. But we are having data what happened to those two districts before the program was launched. And the data actually can tell us about that. So this is normally called the parallel trend or the common trend assumption. So for DID, it is important that we should have information about both the comparison group and the treatment group before the program was implemented. It is not necessary that we generate their data,
But for some other reason, a lot of surveys are there. They actually offer quite rich data sets about the characteristics of household, villages, even districts. And then let's say the program is implemented in 2018. So now what happens after 2018? We expect a change in the trajectory. Oh yeah, because the control group, हमारी assumption ये है, it should go as it was going before, because there was no program. But we expect that the treatment was in Chakwal, for example. So the Chakwal should be moving a little bit higher than that in terms of the outcome, because we are expecting the effect there, because the program was implemented there. So you can see there is a change in the trajectory. And now the idea of differences is that this is the counterfactual, right? Because that's the control group. What would have happened to Chakwal had Chakwal not been exposed to that particular program? Then this would have been the trend of Chakwal in the absence of the program. Although we do not observe the real data of Chakwal, because Chakwal is in real sense, Chakwal is exposed to the program. There is a treatment going on, but we can estimate this, right? How can we do that? By looking into this, because this would have been going in the same trajectory as the control group was going, because ये दोनों actually almost क्या है? Apple to apple है, almost. Yes, but what has happened here is the only thing that the program was implemented here. So the problem we might encounter in this case is that we need to make sure that simultaneously there is no other policy, other reform being implemented in Attak. अगर चकवाल में कैश ट्रांसफर चल रहा है और अटक में कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, so that can be problematic for evaluation, right? So we may not be able to draw a meaningful conclusion about that. So differencing and differences, of course, is one of the robust designs of impact evaluation, but there are a lot of assumptions that we have to make. And one of those assumptions is that simultaneously there is no other policy or program being implemented. So I'll just give you my own example. I mean, recently we conducted an impact evaluation of the land record computerization in the Punjab. And in Punjab, when that program was implemented, they for different reasons, because it was funded by the international agency, then they implemented in 18 districts first, and after 3 years later, the program was completed across Punjab. So we have got naturally two groups of districts. One, the program was implemented earlier. The other, the program was implemented later. So sometimes you are having access to this type of data, and it needs a little bit work. But I know you are working in the government departments and you are actually implementing, so you may not be dealing with these technicalities. I'm going into much details about that. But the general idea is that अगर आपके पास कोई proposal आता है evaluation का, and if the evaluation teams comes up with an idea that हम आपके program का impact evaluate कर रहे हैं, आप हमें commission कर, आपको ये देखना चाहिए कि उनका design क्या है, right? So before commissioning an evaluation project, you need to make sure that the design is really causal design. It really offers a causal inference of the effect, or it is simply based on before and after. I just think about this before and after. अगर हम before and after कर ले, सिर्फ चकवाल में कर ले, so then how do we know that what would have happened to Chakwal in the absence of the program? हमें कोई idea नहीं है उसका, because Chakwal तो अब treatment group में है. अब Chakwal is no more in the control group. So हम Chakwal को किसके साथ compare कर लें? That's actually the problem in simply comparing before and after. Later in our activity, Professor Esther is going to share with you an evaluation scenario where you should think about the problems or potential challenges with the simply, conducting an evaluation for the program that you might be interested in, or you might be commissioning to someone. Here is some other details of the program. So what is the real impact in this case? That could be the intervention effect, because this is the treatment group. This should have been here in the absence of the program. So what has happened to it is actually the impact, not the difference between this and that. That would be a kind of, a false, not a correct conclusion to say that this difference is the impact, because this difference existed before as well, right? So the two groups differed before of the program as well. Time कितना हो गया? ठीक है, मैं खत्म कर दूंगा, कोई मसला नहीं. हाँ, ठीक है. So the next method is the regression discontinuity design. आप सोच रहे होंगे कि कौन से econometrics में हम चले गए, लेकिन believe me,
This is also interesting. Regression discontinuity design actually utilizes that threshold that normally is applied in program implementation. For example, Benazir Income Support Program, it has a threshold. Those who are eligible is decided by that particular threshold, 16.7 something, 0.17 something, जो भी score है. And similarly, Prime Minister laptop scheme के लिए threshold ये था कि वो 3.5 GPA हो किसी student का. So that threshold actually allows us to have two set of individuals, households, and villages and whatsoever, to differentiate them between the treatment and control, right? But there is a question. So before that, I'll just quickly go into question. If there is a question, then we can go back. Please, sir. Yes, करनी चाहिए. जो अभी हमने पिछला मेथड पढ़ा उसमें आपने कहा कि अगर फर्स्ट चले हम एक प्रोग्राम कैश ट्रांसफर कर किसी एक सूबे में कर रहे हैं और मतलब दूसरे सूबे में या उसी सूबे में कोई और प्रोग्राम ना चल रहा हो, अगर हमने कंपेयर करना है उसको किसी और सूबे से, तो वहाँ पे कोई और प्रोग्राम ना चल रहा हो तो उसकी इफेक्टिवनेस पे वो मतलब असर करेगा. ऐसे तो फिर उसका अपना ऑब्जेक्टिव जो हमने तय किया था फर्स्ट कैश ट्रांसफर से हमने उसकी जो हाउस होल्ड ग्रॉसरी है उसको अपलिफ्ट करना था, तो उससे उसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ यही था कि उसकी आपको कंपैरिजन ग्रुप का भी वो ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए. अगरचे वहां प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन वो ऑब्जेक्टिव या इंडिकेटर चल तो रहा है ना. फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है तो अटक में भी लोग कंज्यूम तो करते हैं ना हाउस होल्ड, और चकवाल में भी करते हैं. अब प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, ठीक है, हाँ, दैट्स द ऑब्जेक्टिव. तो आपने चकवाल के उस ऑब्जेक्टिव को ट्रैक किया ओवर द इयर्स और आपने अटक के भी उसको ट्रैक किया. And given the fact that there is no program in Atak, but you use the same outcome variable, that's actually the idea behind the differencing and differences, the same outcome of interest. So ये जरूरी होना चाहिए कि आपका जो outcome of interest है वो same होगा. अगर आप different है तो definitely you are not comparing the two groups. Sir, ये जो कंट्रोल ग्रुप वाली मेथोडोलॉजी है ये बायोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट है उनके अंदर तो बड़ी अच्छी है. yes, कि आप अदर कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट रख सकते हैं. right. आपने पौधों के ऊपर एक ग्रुप के अंदर जो है अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रेस करना है तो एक उसी एनवायरनमेंट में दूसरे दो पौधे रख के उनको ना दे तो वो तो ठीक है, लेकिन जो इंसानी सोसाइटी है वो बहुत डायनामिक है. Yes. अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट इम्पॉसिबल है. अगर आप कैश ट्रांसफर नहीं भी कर रहे हैं एक में और दूसरे में कर रहे हैं, हो सकता है जो आप जिसको कंट्रोल ग्रुप समझ सकते हैं उनका शौर थोड़ा सा बढ़ जाए. Yes. उससे चेंज आ जाएगा. तो आई थिंक दिस इज That's a very पॉसिबल टू यूज द कंट्रोल ग्रुप yes, while studying the human behavior. yes, very true, and I perfectly agree with you. The reason is that's why हम कंट्रोल और ट्रीटमेंट जब करते हैं सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंसानों को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. लेकिन जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो ये गलती तो एक विलेज लेवल तक हो सकती है, हाउस होल्ड लेवल तक हो सकती है. जब हम एवरेज की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की या लार्ज स्केल डेटा सेट्स की, तो हम ये एक काइंड ऑफ बिलीव करते हैं व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस, the law of large numbers, then the mean, the average, it tends to be a good estimator of the population parameter. ये एक्चुअली एक स्टैटिस्टिकल रियलिटी है इसके ऊपर. तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन रियलिटी हम इंसानों को लेबोरेटरी के अंदर नहीं कंट्रोल कर सकते, बट दैट कैन बी अ सोशल साइंस लेबोरेटरी. सो आजकल जो ज्यादातर रिसर्च हो रहा है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में, दैट इज एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन सोशल साइंसेज. और अभिजीत बैनर्जी आपने नाम सुना होगा जिसको नोबेल प्राइज मिला. It was actually given because of the impact evaluation studies of local experiments conducted in Asia, in Africa, in those countries. So yes, there could be problems like spillover, maybe attrition. जो आपने कंट्रोल किया हुआ है उससे लोग निकल गए. अफगानिस्तान में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसमें लंच था बेसिकली बच्चों के लिए. बच्चों के लिए स्कूल में लंच दिया गया. एक डिस्ट्रिक्ट में लंच देता था, दूसरे में नहीं देते. तो उसका मसला ये हुआ कि जो नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उनको जब पता चला कि फलाना डिस्ट्रिक्ट में लंच देते हैं, डब्बा देते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को वहां से उठा के यहाँ इनरोल कराया, अपने जो फैमिली और फ्रेंड्स जो भी जानने वाले थे उनके यहाँ गिराया. तो जब उन्होंने इम्पैक्ट इवेलुएट किया तो उसमें ये पता नहीं चला कि फर्क क्या है. फर्क था बेसिकली लंच प्रोग्राम का बड़ा इम्पैक्ट है अटेंडेंस के ऊपर, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि
दूसरे भी तो इंसान थे, वो देख रहे थे कि यहाँ पर तकसीम हो रहा है, हम क्यों ना आ जाए उसमें. सो इन रियलिटी आई एग्री विद यू दैट दिस इज सॉर्ट ऑफ अ sounds like really a natural science laboratory. But yeah, if you have a large number of observations, what we have these days, for example, you have mixed data, you have PSLM data, you can apply these things and you can correctly estimate the effect of the program, and that could be attributable to the program. I'll just quickly go back to the regression discontinuity before we stop for question and answer session. Yeah. Yeah, I mean, having a baseline is something really important. We need to, that's why I told you that in prospective evaluation, we need to plan well ahead of the program implementation. हमें बेसलाइन सर्वे कंडक्ट कराना चाहिए, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए. अगर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ही हमारा आउटकम है, even though that's the only outcome, we should also collect data about other things of the household. फ्यूचर में हम किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं. So ये हो सकता है हमारे लिए. So I know there are many questions, but let's first finish the methods and then we can go on. So the discontinuity design, I'll just show you a graph there. Okay, so here. So for example, the program is implemented based on certain criteria. अब वो criteria अगर एक threshold है, जो कि एक subjective criteria नहीं है, लेकिन एक number है which is a distinct number known, which creates a sharp discontinuity, then you can utilize that sharp discontinuity for evaluating the impact of that program. For example, the poverty score, there is a sharp discontinuity because the threshold, those above the threshold are not eligible. So they cannot fall in to become, poor to get the stipend. But the stipend will be distributed among those people who are eligible, and that eligibility criteria is determined by the threshold. So on this side of the threshold, those people are eligible, they receive the stipend. On the other side, they are not eligible. अब आप सोचेंगे कि वो तो मालदार हैं, वो कंट्रोल ग्रुप कैसे हो गए? और मैं कहता हूं कि हो सकता है, that could be a control group. Why? Because जब आपके पास ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये जो क्राइटेरिया के बिल्कुल करीब लोग हैं ना, जैसे जिसका स्कोर जो पॉवर्टी है वो 16.17 है. Think about the person whose score is 16.18. अभी तो वो इनएलिजिबल है, लेकिन उसके पॉवर्टी में दूसरे में फर्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. So they are as good as random on both sides of the threshold. लेकिन given that कि threshold जब आप determine करते हैं, that should be kind of looked into the very locally randomized sample. At the very local mean कि threshold के बिल्कुल आसपास जो लोग हैं, ऊपर साइड पे इनएलिजिबल हैं, लोअर साइड पे एलिजिबल हैं, और आप उस कट ऑफ यानी उस गैप का फायदा उठाकर उनको दोनों ग्रुप्स में डिवाइड कर लें. एक को ट्रीटमेंट है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप है, रिग्रेशन रन कर लें, एंड द इफेक्ट विल बी देयर. सो ये डिजाइन, इसको कहते हैं रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन. इन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम मोस्टली we utilize this threshold, that criteria, and to evaluate the program effect. There are some really good studies conducted in Pakistan as well, and in other countries. You can look into those studies. इसमें जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ आपको वो बताऊं, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन वाइज ये हो सकता है. मैं भी यूनिवर्सिटी में हूं, तो मुझे पता है कि जब लैपटॉप लॉन्च हुआ प्राइम मिनिस्टर, सो देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु वर लुकिंग, सर आप मुझे थोड़ा सा जीपीए बढ़ाएं तो मुझे लैपटॉप मिल जाए. मैं सोच रहा था कि यस, ये हो सकता है, क्योंकि बच्चा तो ऑलमोस्ट he or she is as good as those who receive the laptop. Let's say 3.5 GPA नहीं है, 3.49. अब दोनों तकरीबन सेम है academically speak, लेकिन एक जो by the decision of criteria happens to be ineligible, the other happens to be eligible. अब ये दो ग्रुप्स तो बन रहे हैं ना, एक्चुअली ग्रुप्स नेचुरली बन रहे हैं, क्राइटेरिया बना रहा है बेसिकली. मुझे उन दो ग्रुप्स का फायदा उठाना है बेसिकली, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोकल लेवल पे इसको मैनिपुलेट आसानी के साथ किया जा सकता है. मतलब जो असाइनमेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर ट्रीटमेंट असाइन की जाती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन वाले जो एजेंसी वाले हैं जो भी है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं. अगर मैं उस बच्चे को 3.49 की बजाय 1 मार्क ज्यादा देता हूं तो उसको लैपटॉप मिल जाता है, जबकि मैं उसको जानता भी हूं. सो ये जो मैनिपुलेशन है ये हो सकती है रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन में. लेकिन इसका हल भी है, स्टैटिस्टिकली इसका हल भी है. वो ये है कि आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें कि वो एट द जस्ट अराउंड द थ्रेशोल्ड वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली नहीं है. अगर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी स्क्यूड है तो पता चल गया कि वहां पर कोई गड़बड़ हुई. And that's what we call the manipulation in the regression discontinuity design, could be potential threat for the
for the validity of the regression discontinuity design. So आप यहाँ पर दो किस्म के देख सकते हैं, sharp RDD and fuzzy RDD. Okay, sharp mean कि perfect compliance हुई है, जैसे क्राइटेरिया है ऐसे ही स्टाइपेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एंड एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलैक्सेशन, नथिंग, just the cutoff. But it in reality never happens. There is slightly problems with that. People report different poverty just for the sake of stipend, and could be a lot of reason. हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर नो मैनिपुलेशन वर्सेस मैनिपुलेशन. अगर मैनिपुलेशन हुई है तो आप डेटा को प्लॉट करके देख सकते हैं कि लोगों ने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हुए प्रॉब्लम की, और आसानी के साथ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि द वन just across the threshold is smooth, and the other there is a manipulation that has happened. That is sort of skewness, right? So most of the eligibles are clustered around that left side of the threshold, and that makes it like we can imply that okay, they were given there. 10 मिनट जी. अब आप इसको आगे जाके इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लें. एलिजिबल वर्सेस नॉन एलिजिबल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट शुड इंप्लाई दैट द yes, the implementation was good and compliance was perfectly had. Okay, let's stop over here. Okay, then this is a study conducted by I think OPM, right? And this is taken from there as well. No impact. Some really good studies are conducted. These papers are really causal evidence of the impact of the BISP program. Some other studies are also there. You can look into that. These slides are uploaded on the SharePoint, so you can also use it for your own research purposes as well. These methodologies are very important. Okay, then there is another method called the matching method. Okay, just the general idea of matching method is that we do not have, let's say, a control group. I mean, by design, we have not decided कि हमारा ये control group होगा, ये हमारा treatment group होगा. You just have a treatment group, but you have a large number of data sets कि जिसके अंदर आप ऐसे household को identify भी कर सकते हैं कि जिनकी probability आप estimate करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये household वैसे तो eligible होना चाहिए थे, लेकिन for some reasons they were not getting the program. और वो based on the household characteristics आप उसको estimate कर सकते हैं, और वो उसको हम कहते हैं propensity score. राइट, प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग. आप जो एसेट्स हैं हाउस होल्ड के, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, एजुकेशन है, हेल्थ कंडीशन है, बहुत सारी चीजें हैं. हो सकता है कि वो हाउस होल्ड जो है वो बिल्कुल सेम हो, जैसे आप देख रहे हैं ट्रीटेड यूनिट्स एंड अनट्रीटेड यूनिट्स, एज, जेंडर, मंथ्स एम्प्लॉयड, एंड लेकिन फॉर सम रीजन वन इज इन द ट्रीटमेंट ग्रुप, अदर इज इन द नॉट इन ट्रीटमेंट ग्रुप. So you got the kind of two groups now. One is the treatment, the other is the control group. अगरचे ये जो control group है ये by design नहीं है, लेकिन आपने select किए हुए उन लोगों को जिनकी probability of becoming eligible for the treatment almost the same है as to those people who are already in the program, right? So that's actually the idea of this propensity score matching, and the common support that that's the common probability of two, and you take that subset of the sample and you compare the difference between the two, right? And that could be a artificially created control group, right, using data. There are also studies using the matching methods, right? And good journals actually these days they will publish only if you have very causal research design, a very robust research design. These are the results of the table. The effect in the treatment, there is a control group. Just आपको ये बताऊं कि जो expenditures हैं that is in the treatment group, और जो control group के non-recipient of the expenditure. Difference आप देख रहे हैं, average difference, the average treatment effect on the treated वो statistically significant भी है, and that means कि program ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, and that's actually we reject the null hypothesis कि program का कोई effect नहीं है. वापस जाऊं. ये बेसिकली अगर आप एक्स एक्सिस पे देख लें ये प्रोपेंसिटी स्कोर है बेसिकली, और अगर आप इसको देख लें तो ये डेंसिटी है उसकी, दैट एक्चुअली मींस कि उसकी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग इनटू द ट्रीटमेंट ग्रुप और इनटू द कंट्रोल ग्रुप. सो डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, राइट? लेकिन जो शेडेड एरिया है, जो कॉमन सपोर्ट्स है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या है? सेम है, ठीक है ना? जो कॉमन सपोर्ट जहां मैंने जो शेडेड एरिया है बेसिकली, ये वो हाउस होल्ड हैं कि by the nature of their characteristics they would have been either in the treatment or in the control group because उनकी characteristics same है, लेकिन for some reason वो उन्होंने अपटेक या उन्होंने enroll नहीं किया प्रोग्राम में, या वो enroll नहीं हुए हैं,
लेकिन that can be a good comparison groups. So you are kind of creating two groups artificially, but by estimating the probability of becoming the treatment group or not. मैं हम इसको डिटेल में बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं if you are interested. Okay, then excited to the next session, please. That will be by Professor Esther, and what we actually learned here, probably. I know this is a much technical debate and stuff, but from the implementation point of view, so the scenario is going to help you a lot to think about it. That simply comparing before and after, maybe, or if there is an evaluation, so बहुत सारे challenges evaluation में हो सकते हैं. आप सबको ये सारी चीजें ज़हन में रखकर कमीशन करना पड़ेगा किसी इवेल्युएशन. हाँ भाई आ जाओ, प्रोजेक्ट है, कोई कंसल्टेंट आ रहा है इवेल्युएशन के लिए, आप उसको थोड़ा सा डिजाइन को भी डिस्कस कर लो कि भाई आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इज दैट अ कॉजल methodology or not. So we're looking forward to that practical activity exercise by Professor Esther. And thank you so much for I was not expecting this much attention because this is technical details, but thank you so much. Oh, please. Oh, sorry. Questions are there. Yeah, we can discuss later, but as well, please. जी जी प्रोग्राम पर दूसरे में नहीं है तो कुछ लोगों ने जो बच्चे शिफ्ट कर दिए अभी this would be a percentage of the population. Yes. Children 5 या 1% हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो ना डिस्ट्रिक्ट तो still you can compare both. I agree. Or even you can compare within the district कि आपके जो बच्चे वहां से ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको भी जो है ना आपने तो उस मसले की सॉल्यूशन ही दे दिया. So thank you so much for that, because you know that's what we do normally. इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी सी अट्रेशन हुई है या स्पिल ओवर हुई है तो हम बस कर लें कि नहीं, बस रिजेक्ट कर लें. नहीं, वी कैन डू अ लॉट ऑफ these checks that we can ensure कि हाँ वो वरी है अपनी जगह पे, लेकिन हम उसको कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. So and that's what you suggested, exactly what we normally do in real life when this sort of situation happens. So yeah. ले लो, टाइम है क्या, ले लूं इनके क्या, इनमें क्वेश्चंस तो मैं इनसे क्वेश्चन कर सकता हूँ राधा. Sir, मेरा Please, question, please. Sir, you delivered a very good lectures about the data analysis and comparisons. Thank you so much. But instead of this lecture, sir, you know that most of us are working particularly in different department practically. Yes. Sir, why you are not explain some data by using some suitable software, because this is much more. Oh, software. Thank you. Note this, please. Next time we should include Stata as well. I mean, or SPSS. Very useful, handy. जो ये वर्कशॉप की जो डिजाइन है ये ऐसा है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल करवाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, वरना आई वुड लव टू कि स्टाटा या डेटा को यूज करके हम कैसे कर सकते हैं. लेकिन दिस इज अ बिट मोर चैलेंजिंग एज वेल. जो नॉर्मली हम करते हैं ना, तो काफी सारी मेथोडोलॉजी पढ़ के उसके एंड में जाकर हम उसको अप्लाई करते हैं डेटा कलेक्ट करके. आपका इंटरेस्ट को मैं सलाम इसलिए करता हूं कि मोस्ट पीपल अवॉइड प्लेइंग विद डेटा, आई मीन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, surely मेरा भी वेबसाइट्स है. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर्स प्लेटफॉर्म्स जहां पर स्टेटा के जो मैं आपको बुक भी रिकमेंड करूंगा, उसमें यह है कि प्रॉब्लम है सोशल प्रोटेक्शन का, उससे रेलेवेंट डेटा सेट है, अवेलेबल है, डाउनलोड कर ले. उससे रेलेवेंट स्टाटा का कमांड भी है सॉफ्टवेयर का कि ग्राफ जनरेट करना है आपने, या रिजल्ट जनरेट या रिग्रेशन रन करना है. अब उसको सिंपली डाउनलोड करके रन कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. रही बात इंटरप्रिटेशन की, तो आप उसको सीख भी सकते हैं और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको क्लियरली उसको इंटरप्रेट भी करेंगे कि क्या उसका इफेक्ट है कि नहीं है. लेकिन आई थिंक इट कुड बी वेरी गुड आइडिया टू इंक्लूड how to work with software जो कि आप implementation में काम कर रहे हैं. I agree with you, that's a genuine concern, although we were not able to do it at this time. Apologize for that. Okay, Yeah. thank you. इसके साथ साथ नेक्स्ट कोहॉर्ट में एक और चीज इंक्लूड कर लीजिएगा, जो डेटा अरेंज कर लिया, इन्फ्रेंस निकालना जो है हमारे मेरे लेवल के ऊपर, या जितने ये लोग बैठे हैं, इनका ये मकसद नहीं है कि इन्होंने एवरेज कैसे निकालना है, मॉड मिनिमम कैसे करना है, कोई नहीं. हमारा ये है कि जो डाटे से फिर निकलता है, फॉर एग्जांपल एक हम रैंडम स्टडी करते हैं, पूरी पॉपुलेशन का जो फुट साइज है वो 8 निकल आता है.
उसको इंटरप्रिटेशन इन्फ्रेंस कैसे निकालना है हमारे लेवल पे, ये काम है, वो भी राइट, इंक्लूड करने चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक, तो बिल्कुल इससे ठीक। वो ज्यादा बेहतर है कि हम्म। डेटा जो है बताते खुद, मैंने खुद डाटा के ऊपर कभी काम नहीं करना, मेरे पास रिपोर्ट आनी, मैंने उसको इंटरप्रिटेशन Interpretation is more important. Yes. इंटरप्रिटेशन इज मोर beneficial for us instead of these methodologies. Yes, I agree with you. जो मेथोडोलॉजी है बेसिकली, ये चूंकि मॉड्यूल मेथोडोलॉजी के ऊपर था, वी हैव अनदर मॉड्यूल फॉर इंटरप्रिटेशन। सो जिसके अंदर हो सकता है कि आप इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा फिर फोकस करेंगे, लेकिन कभी कभार विदाउट नोइंग अबाउट मेथड्स बिहाइंड एंड जस्ट इंटरप्रिटिंग, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कभी कभार हम एक गलत इन्फ्रेंस भी ड्रा कर सकते हैं, जस्ट कि हमारे पास वो आइडिया नहीं है कि बैक एंड पे वो डिजाइन कौन सा है, आरसीटी है, डीआईडी है, या कोई ऑब्जर्वेशनल डेटा है। तो एक्चुअली ये आइडिया था हमारा कि मेथोडोलॉजी वाइज सम हाउ एक्सपोजर दे दें आप लोगों को, बाकी इंटरप्रिटेशन surely that's very important as you are dealing with the implementation of the programs. आप कहना चाहते हैं सर, प्लीज। सर एक क्वेश्चन है कि कंट्रोल ग्रुप की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? एक प्रोग्राम अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसी सैंपल से, लेट्स से अगर हमने ये सोशल प्रोटेक्शन का जो कोर्स है उसकी इवेल्युएशन करनी है, तो ये बेहतर है कि आप कोर्स से पहले हमारी एक इवेल्युएशन करें और कोर्स के बाद करें, बजाय इसके कि एक और ग्रुप आप किसी और हॉल में बिठाएं और उनकी ट्रेनिंग ना करें, बड़ा और अच्छा उनसे क्वेश्चन दोनों है। इवेल्युएशन That's exactly कि हम हमारे लिए जरूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे इस मॉड्यूल के टीचिंग की वजह से जो इम्पैक्ट हाथ में आया है, ये हमारी वजह से आया है, या हो सकता है कि यहाँ आने में आपस में डिस्कशन करने से आया है? हमें कैसे पता चलेगा? ये प्री पोस्ट जो है बिल्कुल सिंपल हो गया ना। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी इन मॉड्यूल्स को डिलीवर करने से वो इम्पैक्ट आया है, या हो सकता है कि आप लोगों की अपने आपस में इंटरेक्शन से हुआ है, और हम कल को महीन एट्रीब्यूट करेंगे, देखो ना हमारे वर्कशॉप का ये फायदा है। लेकिन आइडियली वुड हैव बीन कि एक ऐसा भी ग्रुप हो लोगों का जो 5 दिन यहाँ गुजारें बेसिकली विदाउट दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद हम और बिफोर वाला कंपैरिजन कर लें, और उसमें शायद उसमें भी बेहतरी आई हो मेरिट में आने से या एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में। तो हम कैसे फिर जस्टिफाई करेंगे अपने आर्गुमेंट को, ओहो ये हमारे प्रोग्राम की वजह से हुआ है। वो कहेंगे कि देखो ना वो हमारे लोग भी अच्छे हुए हैं, अच्छा परफॉर्म किया हुआ, तो आपका किधर गया। इसलिए ये जरूरी होता है कि एक कंपैरिजन ग्रुप हो, कंट्रोल ग्रुप हो, जो कि सिमिलर कंडीशंस को एक्सपोज्ड हो, लेकिन प्रोग्राम वहां ना हो। तो इसलिए वो जब हम एट्रीब्यूशन देते हैं प्रोग्राम का, वो कॉजल होगा, वो प्रोग्राम ही की वजह से होगा, क्योंकि दूसरा कोई वजह नहीं है एक्चुअली। बाकी दोनों ग्रुप सेम है एक्सेप्ट द प्रोग्राम। असल में सर कंट्रोल ग्रुप का एस्टेब्लिश करना जो है बहुत हाँ चैलेंजिंग तो है, भी हो सकता है। आप लेट्स से जितनी एक्सपेंडिचर इस ट्रेनिंग की आई है उतना मजीद आपका एंड दैट्स वही आरसीटी में लिमिटेशन है। मैंने कहा कि कॉस्टली है, ये कॉस्टली है ऑफ कोर्स, कॉस्टली। सर प्लीज। जो लोग आए होते हैं जो लैंग्वेज पढ़ के नहीं आए, मतलब एमए इंग्लिश किया हुआ है, वो में भी उन्हें इतना ज्यादा कंसेप्चुअली तो नहीं पता होता, लेकिन वो जो राइटिंग में लेके आते हैं उससे लगता है कि ये हाफिज बन गए। तो ये एक प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग के अंदर जो है ना प्रैक्टिकली जो मसला आता है वो ये आता है। सो परफॉर्मेंस को हम मेजर कैसे करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी इंडिकेटर को हम डिसाइड करते हैं ना कि लेट्स से आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इंडिकेटर सबसे अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेगा, उस इफेक्ट को जिसको हम डिजायर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि बड़े मुश्किल टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। That's what we're dealing with. जस्ट एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली इस फील्ड में आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हम लोग चूंकि पब्लिक सेक्टर से हैं तो ये एवेल्युएशन तो हमें करवानी पड़ती है। तो व्हाट डू यू थिंक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कौन सा मेथड जो आपने 5-6 बताए हमें उनमें से निस्बतन बेहतर हो, जो रिजल्ट्स अच्छे, क्योंकि सोशल प्रोटेक्शन तो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के प्रोग्राम्स होते हैं, तो जो ज्यादा बेहतर कौन सा उसमें हो सकता है? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं जिस ऑर्डर में मैंने प्रेजेंट किया, दैट्स अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ अप्रोच। अगर कॉस्टली बहुत ज्यादा है, आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के पास पैसा है, तो आरसीटी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन वो नहीं है तो दूसरे भी ऑब्जर्वेशनल डेटा को यूज करके भी आप कर सकते हैं। आपके सोशल प्रोटेक्शन में चूंकि नॉर्मली ये है कि एक थ्रेशोल्ड है, डिसाइडेड थ्रेशोल्ड है, जिसके ऊपर ही एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाती है, उसका फायदा उठा सकते हैं हम। और आई थिंक आरडीडी जो है दैट्स मोर कॉमनली यूज्ड इन दैट रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन, नॉट दैट कॉम्प्लेक्स एज इट सीम्स टू बी,
but you just need a kind of, you know, a basic econometrician to apply that tool, and you can come up with a very good results about it. But in terms of these 4 methodologies, other than them, there are also methodology that you can use, synthetic control methods, instrumental variable approach is becoming so popular these days, but those are more, you know, kind of difficult things for you maybe, so that's why I didn't talk about them. but I can suggest you some really good method. जब आप मुझे बताएंगे कि किस तरह का प्रोग्राम है, तो मैं आपको उसके बेसिस पे सजेस्ट कर सकूंगा इंशाल्लाह। प्लीज। ये थ्रेशोल्ड की जब हम बात करते हैं तो वही जो आपने बात की कि Cut उससे off. बिल्कुल कट ऑफ से जो है वो हो सकता है वो भी एलिजिबल हो सके उसमें, तो क्या ये आपका पर्सनल इसमें चाहिए ओपिनियन कि इसमें कोई बैंड रख दिया जाए कि उस बैंड में जो हो बैंडविड्थ, यस, उसको जो एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जो कट ऑफ हम कहते हैं, ये नहीं है कि पावर्टी स्कोर जिसका 100 है उसको आपने कंट्रोल ग्रुप में रखा है, जिसका 0 है उसका ट्रीटमेंट ग्रुप में, नहीं। जो 16.17 अगर कट ऑफ है तो 16.18, 16.1, ज्यादा से ज्यादा 18 तक, और फिर नीचे साइड पे 15 तक है। इसके दरमियान बहुत ज्यादा लोग अगर हैं, so they could be closer enough, as good as if this would have been a random sample, क्योंकि उनमें इतना फर्क तो नहीं है, बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको हम कहते हैं लोकल रैंडमाइजेशन। कंडीशन इसका ये है कि वो डेटा मैनिपुलेटेड ना हो, और ये भी कंडीशन है कि कट ऑफ वाकई इंप्लीमेंट किया गया हो। कट ऑफ ना, ये जरूरी है उसको होना। बस यही 2 चीजें हैं आरडीडी में, बाकी चीजें तो ऑलरेडी डेटा से पता चल जाएगा, एंड यू कैन यूज अ क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड जस्ट अप्लाई दैट, एंड या यू कैन डू दैट। थैंक सर, प्लीज। अप्रोच है उसके लिए कि आप जो है पहले बेसलाइन कर लेते हैं, ठीक है। आप जो है प्रोग्राम किस चीज पे डेवलप कर रहे हैं, अगर आप डोनर प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं उसके लिए जब रिसर्च करते हैं बेटर का बेसलाइन, अगर आप बेसलाइन नहीं कर रहे फील्ड में और आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, दैट्स अ हाइपोथेटिकल प्रोग्राम। यस, सिमिलरली पीसीएल भी आप डिजाइन करते हो तो हम जो है ना वो उसके लिए भी जो है आपको पूरा जो है ना वो फिजिबिलिटी करनी पड़ेगी, और वहां पर जो है डेटा प्राइमरी डेटा लेना पड़ेगा। फिर आप जो है ये कंट्रोल वाले मेथडोलॉजी जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पता ये है कि नॉर्मली जो है ये प्रोग्राम अप्रूव होता है रिस्पांसिबिलिटी बजट ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद जो है उसके अंदर एक रखा जाता है जो है चाहे जिसका भी बेसलाइन हो वो अपनी तरफ से बाद में होगा प्रोग्राम। यस, ये जो रॉन्ग एट्रीब्यूशन है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जिसको टाइप 3 एरर कहते हैं बेसिकली। तो ये है कि हम स्टार्ट में डिजाइन ऐसे करते हैं कि हम अपनी तरफ से बेसलाइन डिसाइड कर देते हैं कि चलो हमारी बेसलाइन, या ये हो सकता है कि प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाए, बाद में जाएं और फिर हम कहें कि जब पहले हमारे पास स्टेटस ये था और अब स्टेटस ये है। लेकिन ये जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ये इवैल्यूएशन जो ज्यादातर रिसर्च वाला कंपोनेंट है, ये बेसिकली इसका ये है कि हम, हमारा मकसद जनरलाइजेशन होता है, स्केलिंग अप। तो आप PC1 की बात कर रहे हैं, दैट्स नॉर्मली इंटेंडेड फॉर अ पर्टिकुलर सबसेक्टर एंड उसके ही तक महदूद होता है। यहाँ जो RCT की जब आप बात करते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि अगर हमने पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम लॉन्च करना है, व्हिच कुड बी अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो उससे पहले हम एक पायलट प्रोजेक्ट कर लें जिसके ऊपर हम टेस्ट कर लें बाकायदा काइंड ऑफ लेबोरेटरी, और ये देख लें कि वाकई में प्रोग्राम का इफेक्ट है, और अगर है तो कितना है, बेसिकली हाउ मच इट इज वर्थ टू डू समथिंग, और अगर है तो फिर जनरलाइज करें। Yeah. अप्रोच ले रहे हैं कि टेस्ट करें Next step. फिजिबिलिटी बनाते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग पायलट जो है ना, आप फिजिबिलिटी है जो आपके लिए स्टडी है वो कराएं, ताकि आपके पास जो है रियल और रॉ डेटा है इसका प्रोग्राम देख सकें। That is actually part of this, जो feasibility आप कह रहे हैं ना, दैट्स बेसलाइन सर्वे, दैट शुड बी लाइक अ रियल सर्वे, एंड आई थिंक दैट इज नीडेड फॉर एवरी प्रोजेक्ट। जहां तक बेसलाइन सर्वे की अवेलेबिलिटी है तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उसकी इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि हमारे पास पास्ट का डेटा भी है उसके बिफोर। लेकिन जहां नहीं है, चैलेंजिंग वहां पर भी है। सो आई एग्री विद यू, आई मीन there's a lot that we can do to make it more maybe simple and easier. Any other question before we, please? मैं आपके और लंच के दरमियान बड़ा बन गया हूँ। सुबह वाले सेशन से सर ये रिलेटेड है, क्योंकि हम सिर्फ जब सिंपल रिग्रेशन पे जाते हैं फिर चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं। डोंट यू थिंक कि पाथ एनालिसिस या सिस्टम डायनामिक्स की तरफ हम जाएं तो सोशल प्रोटेक्शन में ये चीजें हमें ज्यादा बेहतर हेल्प कर सकती हैं इम्पैक्ट एनालिसिस में?
इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब जो हम इंपेरिकल साइड पे जाते हैं, बेसिकली जरूरी भी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आजकल जो पॉपुलर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज है, मैं कह रहा हूं नोबेल प्राइज जिसको मिलता है तो इसका मतलब ये है कि दैट्स समथिंग रियली सीरियस थिंग दैट दे हैव एक्चुअली डन। तो इसलिए क्योंकि उनकी स्टडीज जितने भी रिजल्ट्स हैं बेसिकली दैट्स काइंड ऑफ एक्सेप्टेड एज द एविडेंस ऑफ दोस प्रोग्राम्स। अगरचे डिबेट हो सकता है, उसको आप डिसएग्री भी कर लें, लेकिन बाय एंड लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज में आजकल जो भी इंटरवेंशन होती हैं, वी शुड हैव causal evidence. I mean, we should have evidence of the effect of that program, and those evidence should be generated through some of these methods, if not all of them, and maybe some other methods can also be coupled with that, and also qualitative evidence of that. But sometimes qualitative evidence की ये limitation है कि वो एक case study होती है किसी एक district तक मौजूद होती है। यहाँ हमारा मकसद generalization है, it could be even at the global level generalization। मिसाल के तौर पर जब वैक्सीन आई फाइजर की, तो ये पूरी दुनिया में जनरलाइज हुई, लेकिन उन्होंने आरसीटी कंडक्ट करा। आरसीटी के बगैर पूरी दुनिया उसको बिलीव कैसे करे कि इस वैक्सीन से कोरोना खत्म हो सकता है? बिकॉज दे कंडक्टेड इन आरसीटी, एंड दैट्स व्हाई द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली followed, because they believe that the effect on COVID spread because of this Pfizer vaccine is truly attributable to that vaccine, और वो बिलीव करने लगे कि हाँ ये ऐसा ही है। तो इसलिए इसकी जो सिग्निफिकेंस है ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा हो सकती है। जी सर, डू वी हैव टाइम? थैंक यू। छोटी सी इनपुट आपसे, प्रोग्राम्स की अक्सर हम टीपीवीएस करवाते हैं, इम्पैक्ट वैल्यूएशंस होती हैं, अक्सर ये आउटसोर्स ही होती हैं, तो निटीज एंड किटीज में तो हम नहीं जाते, लेकिन दो मेन चीज़ें हम उसमें देख रहे होते हैं। एक तो होती है कि सैम्पलिंग मेथडोलॉजीज, और सैम्पल साइज पे अक्सर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रही होती है कि डिफरेंट जो भी कंपनीज आती हैं उनके सैम्पल साइज काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो उसमें क्या मतलब स्टैंडर्ड क्या है? तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पे थोड़ी सी अगर आप बात कर लें, और सैंपल साइज मिनिमम उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव हो कितना होना चाहिए, क्या उसमें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आप में से किसी को भी क्वेश्चन करना चाहिए था कि हम जब सैंपल की बात करते हैं, हाउ बिग अ सैंपल इज इनफ, आई मीन हाउ गुड द सैंपल शुड बी। तो इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन मैं आपको द लॉ ऑफ लार्ज नंबर बताता हूँ। द सैंपल द ग्रेटर द सैंपल द बेटर। जितने ज्यादा बड़ा हो सैंपल, जितना ज्यादा प्रिसाइज्ड आपका रिजल्ट आएगा, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी आ सकता है उसका। रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, तो जो खैर वो ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, लेकिन नॉर्मली अगर आपका सैंपल साइज बहुत ही छोटा है तो आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए कि मेरा जो डिजाइन है वो ऐसा है कि छोटे सैंपल साइज के साथ भी इन्फ्लुएंस में ड्रॉ कर सकता हूँ स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, जैसे हम टी टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। लेकिन अगर आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा है तो आपका डिजाइन बेशक थोड़ा सा वीक भी हो, स्टिल आप उसको कर सकते हैं कि जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं तो उसमें आप उसका फायदा उठा सकते हैं। देखो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जो है वो भी एक चीज है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पॉपुलेशन क्या है, यूनिवर्स क्या है आपका पूरा। लेट्स से अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की 240 मिलियन लोग जो है वो हमारी पॉपुलेशन में हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मकसद पॉवर्टी एलिविएशन है या वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी है तो हमें वो लोग देखना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है या वल्नरेबल टू पॉवर्टी, वो हमारी यूनिवर्स काइंड ऑफ हो सकता है। अब उसके हवाले से हाँ ये भी हो सकता है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिफरेंट हो। आप देख लें कि हर प्रोविंस से आप 3 डिस्ट्रिक्ट्स रैंडमली सेलेक्ट करें जो कि क्वाइट रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप सिर्फ सिटी से ले लें तो दैट्स क्लस्टर्ड ओनली टू द अर्बन एरिया, अगर आप सिर्फ रूरल से ले लें दैट्स क्लस्टर्ड टू द अर्बन। सो डिपेंड करता है कि आपका, आई वुड से कि जो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट है ना, पैरामीटर ऑफ जिसको पैरामीटर कहते हैं टेक्निकल लफ्ज है, लेकिन पॉपुलेशन पैरामीटर यानी कि मैं जनरलाइज जब करूंगा, अपने रिजल्ट जनरलाइज करूंगा तो मैं इंटरप्रिटेशन किस के लिए करूंगा। तो मैं जब कह रहा हूँ कि देखो हमने सिंध के अंदर एक सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, हेल्थ सब्सिडी, उसका इफेक्ट ये आया है, दिस कुड बी एक्सटेंडेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री इफ in those districts which are having similar characteristics just like that district in the Sindh। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका सैंपल वहाँ छोटा भी है लेकिन आप उसके लिए पॉपुलेशन भी लिमिटेड बना रहे हो तो मेक्स सेंस। लेकिन अगर आप ये कर लें कि आपने शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया और आप कहें कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं अगर वो काम कर लें तो इफेक्ट उसका ये आएगा, वो थोड़ा सा ज्यादा काइंड ऑफ ओवर जनरलाइज हो जाएगा। वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट, एंड देयर इज नो काइंड ऑफ ऐसा कोई स्ट्रिक्टली लिमिट नहीं है जो मैं आपको बताऊं
कितने लोग होने चाहिए, परसेंटेज में कितना होना चाहिए, और डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इवन इफ यू हैव as small as 5% ऑफ द पॉपुलेशन इज गुड, बट डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी नहीं, वो उसी पे अगर बात कर लूँ कि 95% मार्जिन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ले लें, अगर आप पॉपुलेशन इरेस्पेक्टिव कितनी भी हो, आपका 384 सैंपल साइज आएगा हमेशा। अगर आप स्ट्रेटा डिफाइन कर लें, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएं, फिर आपका 384 into 36। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एक्चुअली इज अनदर वे ऑफ टेलिंग यू हाउ गुड इज द रिजल्ट स्टैटिस्टिकली। 90% भी ले सकते हैं, 95 भी, 99 भी ले, लेकिन ये अगेन आप पे डिपेंड करता है कि मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, जिसको मैं इंटरप्रेट करूंगा। वैसे तो ये सब्जेक्ट हमने वैसे टीचिंग आके बात किया था, लेकिन इतना जरूर पड़ा था सैंपल के बारे में दैट शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, कि जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के आ जाए। उसके अलावा कोई उन्होंने कोई एज पैरामीटर होना चाहिए, इतना होना चाहिए। यस, याद रखिए। प्लीज गो अहेड। मुझे एक आहिस्ता खुल रहे हैं सारे 10। let's take one more question seriously and then we can discuss on lunch as well. अगर हम one by one discuss करें। Size of the household कह रहे हैं या number of household? सैंपल साइज क्या होगा? सपोज आपने 2% लिया है, लेकिन आपने बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव जगह से लिया, तो वो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आपने एक गांव से 5000 लिए। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आपने इसकी सैंपल जो डेटा कलेक्शन है सैंपल के अंदर, उसका मैकेनिज्म आपका क्या है। एब्सोल्युटली रैंडम है तो ज्यादा बेटर, एब्सोल्युटली रैंडम लेकिन क्लस्टर नहीं है कहीं खास जगह पे। तो जो आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट से हर कोने से एक हाउस होल्ड भी ले लें, लेकिन आप ये इंश्योर करें कि वो हाउस होल्ड की जो सिलेक्शन है वो बाइस नहीं है, वो एक्चुअली रैंडमली सिलेक्शन है। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप रैंडम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। आपके पास लेट्स सपोज 5% सैंपल आ जाता है, आप क्लेम कर सकते हैं दैट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैं आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से जिस तरीके से कलेक्ट किया हुआ है दैट एक्चुअली अमाउंट्स टू द दैट यू कैन एक्चुअली assume that will be representative of the district. अगर चीज के ऊपर क्वेश्चन हमेशा के लिए होता है कि आपका सैंपल कितना है, मैं तो कहूंगा कि पॉपुलेशन से एक बंदा माइनस करें, दैट वुड बी द बेस्ट सैंपल। लेकिन मसला ये है कि we never have access to this entire population census data at the time. ठीक है, थैंक यू सो मच।